पिक्चर निर्भय हस्ते करू नाही पिक्चर्स पिक्चर एक सेकंड रुको आन्सर करायचं का समोर लॅपटॉप वर ओके गुड आफ्टरनून एवरीवन so today we'll be solving CAPF 2025 pre-question paper okay just a minute instructions तो आप सभी को पता है okay so first question is which one among the following computer languages is the oldest okay which one among the following computer languages is the oldest okay Prolog C++, Java, and Fortran. Okay, so Fortran is the right answer. Answer D. Okay, it was developed in 1950 by IBM. और ये जो क्वेश्चन है ना इसके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस रिपीट होते हैं और सिमिलर पैटर्न पे कब आता है सीडीएस के लिए नेक्स्ट इज which of the following is an application of artificial intelligence okay options है database management system operating system natural language processing and register okay so जो भी आईटी बैकग्राउंड से उनको डेफिनेटली पता होगा दैट इज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग नेक्स्ट इज व्हाट इज द करेक्ट टर्म यूज्ड फॉर अ सेट ऑफ वायर्स यूज्ड टू connect different internal components of the computer system for the purpose of transferring data as well as addresses amongst them क्या होता है एक सेट ऑफ वायर्स होती है
एक दूसरे को कनेक्ट करती है, इंटरनल कंपोनेंट को, उसको बोलते हैं हम बस। ओके। ट्रांसफर डाटा करते हैं ना, मतलब ट्रांसपोर्ट करते हैं डेटा, ये कैसे याद रखोगे, बस से करते हैं। ओके। और बस क्या होता है, इट इज अ डेटा हाईवे इनसाइड द कंप्यूटर। Consider the following: small memory, less expensive memory, fast memory. Which of the above are the characteristics of the cache memory? Okay, cache memory क्या होती है? It is small memory and fast memory. ठीक है, so 1 और 3 ये करेक्ट है, मतलब 1 and 3 only. This is your answer. 1 GB in binary system is equivalent to what? 1224 MB. ओके, होता है ना, MB में होता है डाटा, फिर GB में आता है। तो क्या लगता है लोगों को कि जब 1000 MB हो गया तो 1 GB हो गया, लेकिन 1000 नहीं होता, वो क्या होता है, 1024, 1024 MB इज इक्वल टू GB. The seasonal variation in the amount of solar energy that any place on the earth receives are influenced by speed of the rotation of the earth, pollution, cloudiness, the inclination of the earth around its axis. देखो, स्पीड ऑफ द रोटेशन इससे कुछ नहीं होता, पोल्यूशन ये भी नहीं है, क्लाउडलीनेस भी नहीं है, राइट, ये वैरी करती है, बट इंक्लिनेशन जो होता है, इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस, ये इसका राइट आंसर है। आपको पता है ना। और ऐसा है, राइट, तो ऐसा बोलते हैं एक्सिस उसका यहाँ से, बट एक्सिस ऐसे नहीं है। एक्सिस कैसे है? इसका एक्सिस अर्थ का ऐसे। ओके। ये जो एंगल है ये कितना है, 23.5 डिग्री। और ये इक्वेटर से समझो, ये एंगल बनाता है 66.5 डिग्री। ओके, सो इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस, इसकी वजह से क्या होता है, सीजनल वेरिएशन होते हैं। नेक्स्ट, द रामसर कन्वेंशन इज एन इंटरगवर्नमेंटल ट्रीटी which provides the framework of national action and conservation of cooperation for the wetland. रामसर कन्वेंशन वेटलैंड से रिलेटेड है। उसके बाद, consider the following statements about the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). It is an international body for assessing the science related to climate change. Okay, it was set up in the year 1998 by the World Meteorological Organization. यहाँ पे दोनों भी सही है। ओके, both 1 and 2. India's key climate targets include reduction of 33 to 35% in greenhouse gas emissions intensity by 2023, sorry 2030, increase in non-fossil fuel energy capacity to 500 gigawatts, achieving net zero emissions by 2070. क्या है इसका आंसर, 1, 2 and 3? ओके, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस? अभी इनमें से ग्रीन हाउस गैस कौन सा नहीं है, सल्फर डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, कौन सा नहीं है, वो है एटचा आन्सर ए दाखवतो. ये है, ये है क्या म्हणते, तो वैरी करता है, वैरी करता है थोड़ा इधर उधर। टेंथ, ग्रीन हाउस गैस कौन सा नहीं है इनमें से, सल्फर डाइऑक्साइड नहीं है। नेक्स्ट, which of the following principles of physics is primarily used in sonography, a medical diagnostic process? कौन सा होता है ये, डॉपलर इफेक्ट होता है, राइट। ओके, नेक्स्ट, which of the following laws states that magnetic monopoles do not exist? किसका लॉ है ये, गॉस लॉ।
Okay. The larger area under the hysteresis curve of a ferromagnetic material depicts maximum magnetization, extent of demagnetization, extent of lagging, minimum energy. Lagging, right? Next, the working principle of the refrigerator is based on second law of thermodynamics. Right? When sunlight, white light, falls on a triangular glass prism, a band of colors called spectrum is obtained. Which one among the following represents this effect appropriately? रिफ्लेक्शन है, डिफ्रैक्शन है, रिफ्रैक्शन और डिस्पर्जन है. रिफ्लेक्शन तो पता है आप लोगों को कि सनलाइट जाती है वापस टकरा कर आती है. डिफ्रैक्शन क्या है? When light passes from one medium to the another medium, it gets deflected. Okay, that is diffraction. रिफ्रैक्शन क्या है? रिफ्रैक्शन क्या होता है? कैसे Bending of रिफ्रैक्शन? light. Bending of light, but not spreading हाँ on सॉरी, ये colors. हेलो, That's my answer. देख सकता हूँ. ये तुम्हारा रिफ्रैक्शन है, सॉरी ये वाला. डिफ्रैक्शन क्या होता है? Bending around edges, slits. स्लिट के अराउंड जब लाइट बेंड होती है ना, थोड़ा सा ऐसा ये दिखते हैं इसे. ओके. और लास्ट डिस्पर्जन. डिस्पर्जन मतलब क्या? White light splits into Vibgyor rainbow. राइट. व्हाइट लाइट व्हेन इट पास थ्रू अ ग्लास प्रिज्म अलग अलग लाइट्स में स्प्रेड होती है. ठीक है, दिस इज डिस्पर्जन. दिस इज आवर आंसर. Which one among the following statements related to human eye is correct? For a person suffering from short sight defect, the image of a distant object is focused behind the retina. Short sight defect can be corrected by a converging spectacle lens. For a person suffering from long sight defect, the image of a near object is focused behind the retina. Okay. Or long sight defect can be corrected by a diverging spectacle lens. So right answer is C. The potential difference between the terminals of an electric heating device is 40 volt. Potential difference कितना है? 40 volt है. Okay. So it draws a current of 2 ampere. 2 ampere का क्या है? करंट ड्रॉ कर रहा है. तो रेजिस्टेंस कितना होगा? क्या है फॉर्मूला पोटेंशियल डिफरेंस का? V is equal to I R. R निकालना है हमें, राइट? V अपॉन R आएगा. V अपॉन आएगा, सॉरी. ओके. V तो 40 है. I कितना है? 2 एम्पियर है. रेजिस्टेंस कितना निकला? 20 वोल्ट, सॉरी वोल्टेज कितना? रेजिस्टेंस निकला ना पहले. 2 ampere. 20 वोल्ट क्या निकला? सॉरी 20 R निकला रेजिस्टेंस, है ना, 20 ओम का. तो अभी रेजिस्टेंस तो सेम है, लेकिन उन्होंने क्या कर दिया? पोटेंशियल इंक्रीज कर दिया. 140 वोल्ट क्या है, सो दे increase the potential to 140 volts. So 140 volt upon 20, it gives 7 ohm. Okay. A beam of positively charged particles, say A, is going from north to south. On the other hand, a beam of negatively charged particles, say B, is going south to north. Which one of the following in this respect is correct? B is deflected towards A, B is deflected away from A, B is deflected upwards, and B is deflected downwards. क्या होगा? A जा रहा है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, B यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज. ओके. क्या होगा? B is deflected towards A. A. Okay. Next, उन्होंने कुछ इंस्ट्रूमेंट्स दिए हैं एंड दे आर वर्किंग फिनोमेना. पेरिस्कोप क्या होता है? व्हाट इज पेरिस्कोप? इसका व्हाट इज इट्स फिनोमेना? रिफ्लेक्शन बाय प्लेन मिरर्स. ओके. थर्मोमीटर क्या करता है? सॉरी, थर्मोस फ्लास्क. कंडक्शन एंड कन्वेक्शन मिनिमाइजेशन. गर्म करते हैं ना, रखता है वो चीजें अंदर की. लीवर्स करते हैं मूवमेंट ऑफ अ फोर्स. और लाइटनिंग कंडक्टर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी ये करते हैं. सो ए का 3, B का 4, बी का 4, C का 1, सी का 1. D का 2.
This is your answer. Okay. Next, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स. इनके ऊपर कुछ दिया उन्होंने. The ratio of tensile stress to longitudinal strain is defined as bulk modulus. सही है ये. Ratio of tensile stress to longitudinal strain. सही है. The ratio of hydraulic stress to corresponding hydraulic strain is called Young's modulus. Sorry, ये भी सही है. The ratio of shearing stress to corresponding shearing strain is called modulus of rigidity. Which of the statements are given below are correct? 21 ना. 20. कौन सा करेक्ट है? एक. The only. Okay. मतलब क्या? पहले वाले दो रॉन्ग है. Sharing stress. शेयरिंग स्ट्रेस और शेयरिंग स्ट्रेन का. नेक्स्ट, on eating gypsum के बारे में. Which one of the following statements regarding gypsum is not correct? On heating gypsum at 373 Kelvin, it loses water molecules and becomes CS over dot 4 H, sorry, CS over dot H2O. Oh. स्टडी रूम मध्ये रे. अच्छा पक्का. अच्छा पक्का. कोण टाकलं? हेडेक्स नाही चेक केला. मी पेपर सॉल्व करतोय. करतो. On heating gypsum at 373 Kelvin, it loses water molecules and becomes CS over dot H2O. On mixing with water, plaster of Paris changes to gypsum. ये तो हाँ. Okay. B नाही. चुकीचं आहे रे. What? Which one is not correct? Which one is not correct पूछा है. POP is used for fracturing supporting fractured bones. ये सही है. Although gypsum possesses water crystallization, it is not a liquid at room temperature. ये भी सही है. On mixing with water, plaster of Paris changes to gypsum. Clear. Okay. तो आपका आंसर क्या होगा? B. Which one of the following statements relating to carbon and its compounds are correct? One propene has 3 double bonds. सही है. कितने होते हैं प्रोपीन को डबल बॉन्ड्स? समीता फार्मेसी का है. कितने होते हैं डबल बॉन्ड प्रोपीन को? नहीं पता. हाँ 2 होते हैं. This is wrong. Boiling point of acetic acid is higher than methane. सही है. Yes. Okay. Ethanol reacts with sodium metal and produces hydrogen gas. ये भी सही है. Esters give effervescence on reaction with sodium bicarbonate. सही है. Yes. Okay, so the answer is 2, 3, 4. 2, 3 and 4. Which of the following reagents can cause oxidation of an alcohol? कौन कर सकता है ऑक्सीडेशन का?
or concentrated H2SO4? त्याचे आन्सर सेमच आहे. हा त्याचे आन्सर सेमच आहे. म्हणजे त्यांनी जे टिक केले ना ना, ते तेव्हा सेमच. म्हणजे जेव्हा स्पेसिफिकली क्वेश्चन टाकतोय तेव्हा आन्सर वेगळा. त्यांनी फाईल अपलोड केली आणि आन्सर घे काढल्यास मी स्पेसिफिकली क्वेश्चन्स टाकतोय त्यांनी तिथून काढले ना. तू कोणते आन्सर केलं? वही वाली है क्या? दुसरा पण बोलतोय. ठीक है, इसका आंसर क्या है? 2 and 3 only. Which one of the following reagents can cause oxidation of an alcohol? 23. Hot concentrated H2SO4, alkaline KMNO4, acidified K2Cr2O7, acidified KMNO4. इसका आंसर क्या है? 2 and 3. Which one among the following statements is not correct? The reaction of methane and chlorine in sunlight produces hydrogen gas. ये गलत है. ए है ना 24 का. Unsaturated hydrocarbons, they burn with sooty flame. गलत है. Okay, this is your answer. वैसे क्लोरीन गैस का और मीथेन का जब रिएक्शन होता है क्या बनता है? CH4 प्लस Cl2 क्या देता है? ये देता है CH3Cl plus HCl. Which one of the following is not an exothermic reaction? कौन सा नहीं है exothermic reaction? Decomposition of लीड नाइट्रेट. lead nitrogen. Okay. पोटेशियम नाइट्रेट को क्या बोलते हैं? KNO3. यूरिया क्या होता है? CONH2 twice. Ammonium nitrate and nitroleum is A का 3, B का 4. So this is your answer. Dobernius triads. ऑप्शन Option B. डी. D. Beryllium, magnesium, calcium. The circulation of nitrogen from the inorganic compounds in the soil to form back again is known as nitrogen cycle. Preparation of ammonia by Haber process is an endothermic reaction. Urea is synthetically made by the action of ammonia and carbon dioxide under high temperature and high pressure. Correct कौन सी नहीं है? 2 and 3. Match the list with one with list 2. Okay. CH4 plus 2O2. You CO2 plus 2H2O plus heat and light. ये तुम्हारा सा है combustion reaction है. Mg plus H2SO4 gives MgSO4 plus H2. ये तुम्हारा displacement है. Twice NaOH plus H2SO4 gives Na2SO4 plus H2O. ये आपका कौन सा है? Neutralization reaction. This one is your double displacement. A का 1, B का 3. आंसर आपका. Consider the following statements. Potassium carbonate is a weak salt of weak acid and potassium carbonate is a salt of weak acid and weak base. सही है? नहीं. गलत है. Ammonium nitrate is a salt of strong acid and a weak base. सही है. Ammonium acetate is a salt of weak acid and weak base. सही है. Option B. Spindle fiber is attached to which of the following specific regions of the chromosomes? A. Kinetochore. Which one among the following statements about facilitated transport of in plants is correct?
Facilitated transport requires assistance of carrier proteins. Transport of sodium and calcium ions across the plasma membrane is an example of A. Antipode. antipode का example होता है ये. Which one of the following statements regarding allosteric enzymes is correct? D. क्या होता है allosteric enzymes? Each subunit of allosteric enzyme also contains a regulatory site in addition to the active site. Which one of the following tissues are found in plants is a complex tissue? Xylem. Xylem is a complex tissue. Which one of the following regions in plants is responsible for the growth of its roots and shoots? एपिकल मेरिस्टेम होती है. कौन सी आर्टरी होती है जो ह्यूमन हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है? कोरोनरी आर्टरी. Which one of the following cases classes demonstrates double circulation of blood? Mammals. मैमल्स में होता है. कोलेस्ट्रॉल क्या है? लिपिड है. लिपिड. Okay. Plants adapted to grow in deserts and other dry habitats are called xerophytes. क्या होगा है? The time at 180 degree longitude is exactly 12 hours from the 0 degree longitude, irrespective of whether one travels westward or eastward from the prime meridian. A person moving eastward on Tuesday will count the day as Wednesday when the international date line is crossed. ऑडिओज बंद आहे ना. पुढे बंद. जॉईन ऑडिओ म्हणतात, जॉईन नाही केलं. ये इथं यहाँ पे चालू है. इथे जॉईन नाही केलं. माझ्या हातात वेगळं केलं. वेगळं आहे. तर त्याचा ऑप्शन आहे. तेच म्हटलं एवढी वेळची गडबड करतात. हो, जास्त वेळ नाही लागत. का? 12:30 झाले. 1:30 वाजेपर्यंत होते. ओके, 41 का आंसर क्या आएगा? C, both 1 and 2. C, both 1 and 2. Consider the following statements with reference to salt weathering. Salts in rocks expand due to thermal action, hydration, and crystallization. 42. Initial बंद हो गई क्या? दिख रही है. हाँ, 42 का क्या है? Salts like calcium, sodium, magnesium, and barium have a tendency to expand. Salt weathering is a typical example of chemical weathering. क्या आंसर 1 होगा? and 2. both 1 and 2. Both 1 and 2. फिजिकल वेदरिंग में आता है ये. ठीक है. Which of the following types of mass movements are categorized as rapid movements? कौन सा होता है? C, 2 and 4, mud flow और slump. CPF निगेटिव्ह मार्किंग किती राहतं 0.66, आणि CDS ला 0.33. CPF एक मार्काचा असतो का? 2. दोन. Which of the following statements with reference to stratovolcanoes are correct? Stratovolcanoes are tall, steep cones built of layers of felsic lava and volcanic ash. सही है? हाँ. सही है. They can erupt explosively as felsic lava from stratovolcanoes hold large amounts of gas under high pressure. सही है. सही है. Both 1 and 2. Which one of the following is the main method by which potholes are created in bedrocks by the flowing stream? कौन सा है? Attrition. Attrition aberration. Aberration से होता है. Next, which one of the following ocean trenches are not located in the Pacific Ocean? Bonin, Cayman, Kermadec, South Sandwich Trench. 4. 2 and 4. 2 and 4. 4. D. Cayman और South Sandwich Trench ये Pacific Ocean में नहीं है. Consider the following statements with reference to neap tides. Normally there is a 7-day interval between two neap tides. सही है?
At this time, the sun and moon are at right angles to each other. ये सही है? सही है. The moon's attraction is diminished by the counteracting force of the sun's gravitational pull. सही है. क्या आंसर होगा? 2 and 3. Okay. Consider the following pairs with reference to national waterways. National waterway 1, Ganga, 10, Amba, and 100 is Tapi. 1 and 2. 1 and 2 are only correct. Which one of the following has launched the environmental project? शहीद आजम सरदार भगत सिंह हरिवल लहर कौन सा ये? पंजाब. पंजाब में किया है. Raster data information. Which one of the following statements with reference to the raster data information format is are correct? It has a simple data structure which is compatible with remote sensing imagery. Relationship between cell size and number of cells is expressed as the resolution of the raster. कौन सा? Both 1 and 2. GIS Geographic Information System इसका क्या है? कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं? People. पीपल तो है. सिस्टम. सिस्टम तो नहीं वहाँ पे. सॉफ्टवेयर है. कौन सा होगा? पीपल. 1, 2, 3 and 4. 1, 2, 3 and 4 सारे. डेटा, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, पीपल. हार्डवेयर मतलब क्या होता है? जो सैटेलाइट है ना वो हार्डवेयर है. भारतमाला परियोजना क्या है ये? इंटीग्रेशन. 1, 2, 3 and 4 डी आंसर है. ओके. नेक्स्ट, विच वन ऑफ फॉलोइंग इंस्टीट्यूट वाज एस्टैब्लिश्ड फर्स्ट? कौन सा था पहला जो एस्टैब्लिश हुआ था? IIM अहमदाबाद. जल जीवन मिशन इसका कौन सा पॉइंट करेक्ट नहीं है? कब हुआ था एस्टैब्लिश? नहीं पता. Cities of Hiroshima and Nagasaki are situated on which of the following islands? कौन सा? A, B, C, D. Kyushu, Shikoku, Honshu. and It is Honshu and Kyushu. Okay. For any three natural numbers, अभी मैथ्स है. मैथ्स का मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, बट जो भी डायरेक्ट आंसर है वो बता दूंगा. For any three natural numbers A, B and C, if BC plus 1 upon ABC plus AC is equal to 11/43, then the value of ABC is क्या होगा? 60 होगी. If n is the integer larger than 1, then what is the least value of the integer? N plus 1 n 1 by 2 plus n raised to 1 by 3. क्या होगा? हाँ 3. Answer. B होगा. Unit digit of 3 into 1 plus 4 into 2 into 1 plus 5 into 3 into 2 into 1 plus dot 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 plus 20 into 18 into 17 plus dot 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 into 2 into 1. इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? 2. 2. नेक्स्ट क्या है? Point P on the ground is on the same line as the base and the tips of pair of lines trees A and B such that P is on the left of both these trees. The ratio of heights of A and B is 1:3. The distance between P and A is a meter and the distance between A and B in meter is what? 2A. 2A होगा. Okay. Four cylindrical drums, each of radius 1 meter, are placed such that each one touches other two drums. A sewer pipe is to be placed through the gap of these drums. मतलब क्या है? 1, 2,
3 ऐसे ड्रम से एक दूसरे को टच करते हैं, इसमें से सीवर पर डालना है। इसका मैक्सिमम रेडियस क्या होगा सीवर पाइप का, क्या होगा? b √2 - 1. P and Q are 2 points on a highway 300 km apart. Two bikers A and B at the same time start from the same point from P towards Q. The speed of B is 12 km per hour, less than that of A. On reaching point Q, biker A immediately returns towards B. He meets B on the road at a place 60 km away from Q. What is the speed of A? 36 km per hour. The clock is set right at 8 a.m. in the morning. The minute hand and the hour hand of the clock come together after every 65 minutes. What is the actual time when the clock shows 8 p.m. approximated to the nearest minutes? कितना होता है? 8:05. 8:05. Okay. A triangle of sides 18 centimeter, 24 centimeter and 30 centimeter is inscribed in a circle. Circle है, उसके अंदर एक triangle inscribed किया गया है. The ratio of the area of the circle to that of the triangle is approximately P. Okay. 5:1. Next, if A upon B is equal to 2, B upon C is equal to 3, C upon D is equal to 4, D upon E is equal to 3, E upon F is equal to 2, and F upon G is equal to 1.5. What is the value of A plus B plus C upon E minus F plus G? क्या होगा वैल्यू? 216. 216. Okay. Which one of the following years will have identical calendar with the year 2025? D. Answer 2031 है. ठीक है. We'll take a break of 5 minutes over here and come back.